Now we will do this exercise 1.1. Is 0 a rational number? Yes, obviously 0 is a rational number. Is 0 a rational number? Obviously 0 is a rational. Can you write it in P by Q form? Yes, we can write it 0 by 1. Right or wrong? Find 6 rational numbers between 3 and 4. When this type of sum is given, find 6 rational numbers between 3 and 4. What you have to do is 3 is there, 4 is there. So what you need to do? You have to write 3 by 1, 4 by 1. इसके बीच में 6 लिखना है तो do like this. Equals to 3 into ऊपर में 10, नीचे 1 into 10. ऊपर में जिससे मल्टीप्लाई किया नीचे भी उससे ही मल्टीप्लाई किया, कर सकते हो ऐसा. 4 into 10 by 1 into 10. तो तेरे को क्या मिला? 30 by 10 और 40 by 10. However, 30 by 10 is 0 cancel is again 3 only, and 40 by 10 0 cancel is again 4 only. So 6 rational number in between them is 30 by 10, comma 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, 1 2 3 4 तो लिख दिया. 35 by 10, हाँ 1 2 3 4 5 लिख दिया. 36 by 10, कॉमा 37 by 10 तो और बहुत हो सकता है, लेकिन these are the numbers. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. तो ऐसे करके क्या जाता है. लेकिन अगर बोलता राइट 15 rational numbers between 3 and 4, तब क्या करता है? 100 कर दे, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा. तब तू एक काम कर दे, इसको 300 by 100 लिख दे, इसको 400 by 100 लिख दे. तो अब देख 301 by 100, 302 by 301 by 100, 302 by 100, 303 by 100. 100 लिख सकता है, 100 उसमें से 15 लिखना है. समझ में आया? आया समझ में? तो ये आसान है. तो जैसे इसमें बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5. फाइंड find find 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5. So same, do like this. 3 by 5, you have to write like this. 3 by 5 is equals to 30 by 50 we can write, and 4 by 5 equals to, we can write 40 by 50. So in between 30 by 50 you can write the 5 rational numbers are 31 by 50, 32 by 50, 35 by 50, 37 by 50, 39 by 50. हो गया 5 rational numbers. Got my point? Okay, what is our next question? State whether the following statements are true or false. Every natural number is a whole number. True. Every integer is a whole number. False. -1, -2, -3, -4, these are not whole numbers. Every rational number is a whole number. No. Every whole number is a rational number. So this is also false. So up to this much you understood? Okay. So now exercise 1.2. Now what they have said? State whether the following statements are true or false. Justify your answer. Every irrational number is a real number. Yes, true. Every irrational number is a real number. Because I had explained this, no? Real numbers, irrational numbers and all the types of numbers. हाँ, real number बोला था कि all the irrational numbers and rational number मिलके real number बनता है. All the irrational number और rational number मिलके real number बनता है. मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले भी ऐसा बताया था.
कि दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा. सो दीज आर नेचुरल नंबर्स. दीज आर व्हाट नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, राइट. और अगर ऐसा चला कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, दीज आर होल नंबर्स. यस और नो? एंड अगर ऐसा चला कि इंटीजर्स, हाँ, अगर ऐसा हुआ कि 0 1 2 3 4 5 6 और इस साइड में -1 -2 -3 -4 और इस साइड में भी चलता रहा और इस साइड में चल रहा, तो दीज आर नोन एज इंटीजर्स. सो वी हैव नेचुरल नंबर्स, वी हैव होल नंबर्स, वी हैव integers. Then we have in between integers we have rational numbers. Actually rational numbers are a by b form, so actually those are fractions and decimal numbers, and you know fractions only can be converted into decimal numbers. So actually these are actually fractions, but fractions can be converted into decimal numbers. If you see my previous video you will understand all these things. Decimal numbers, and decimal numbers can be of many basically two types: terminating decimal, right or wrong, and non-terminating decimal. Okay. Now terminating decimals are like 1.52, 3.67. Okay. Non-terminating, they can be repeating also. They can be non-repeating also. Yes or no? Like for example, they can be like this: 1.67777777 dot 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 continuously. So it is like 1.67 bar, or maybe 5.89 के ऊपर बार. तो इसका मतलब ये है 5.89898989 ऐसा. अगर है 1.67295 पूरा के ऊपर बार, तो इसका मतलब 1.67259 295 67295 67295 और डॉट 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 चलता जाएगा. जब डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन से ऐसा आएगा. ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ डेसिमल्स कैन बी देयर. Okay, so these are also from rational numbers only. These are from a by b only. It's just that divide करने से बार बार डिवाइड होता जाता है और आना नहीं चाहता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि आप 2/7 करोगे, तो 7 से 2 से डिवाइड करोगे तो कैसा आएगा? पहले तो जाता नहीं 0.20, 7 2 जा 14. हाँ, ये इतना छोटा में नहीं होगा, इधर दिखाता हूँ. 2 7, हाँ, तो 2 0 पॉइंट, हाँ, तो पॉइंट हो गया. तो अब क्या हुआ? 2 नॉट 2, इट वॉज 2/7, राइट. सो ओके, 7 2 0 पॉइंट. अब आया तुम्हारा एक 0, 7 2 जा 14, 6 पॉइंट के लिए 0, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट के लिए 0, 7 5 जा 35, हाँ, तो 5 पॉइंट के लिए 0, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट के लिए 0, 7 1 जा 7 3 0. फिर क्या होगा? 7 4 जा 28. फिर से 2 आया. अब देखो फिर से 2 आया तो पॉइंट के लिए 0 ले लिया, तो सोचो 20. ठीक है, ये 20 को मैं इधर लिखा. हाँ, तो फिर से क्या होगा? 7 2 जा 14. फिर से 6 आएगा, 60 हो जाएगा ये. फिर से 7 8 जा 56. फिर ऐसा चलता जाएगा ना. फिर से 2 5 2 8 5 7 1 4 आएगा. फिर से 2 8 5 7 7 1 4 आएगा, और ये चलता जाएगा. तो एक्चुअली
2 by 7 is equals to 0.285714 ऊपर में bar. These are repeating decimals, but non-terminating. So these are also rational numbers. Right or wrong? Then who are irrational numbers? Irrational numbers are those. Then, so two types of decimals: the terminating decimals, and the non-terminating decimals. Okay, this both type of decimals, terminating decimals and non-terminating decimals, that both type of decimals are rational numbers because they are obtained from the number a by b. But numbers like 1.01, 001, 0001, 00001, 0000001 and continuously repeating like this, these are not repeating decimals. There can be terminating, there can be terminating decimal, there can be non-terminating but repeating decimal. So there can be terminating decimal, there can be non-terminating but repeating decimal. They are obtained from a by b, just like this number I have just deduced here, or these numbers all have come from a by b, all have come from a by b, means any fraction, okay, division करने के बाद. But this kind of non-terminating and non-terminating and non-repeating decimal have not come from division. They have come from numbers like root 3 is value, pi value, okay, then root 2 value, root 5 value. From these numbers, from this kind of numbers or shards, these are known as shards, okay, this kind of shards and numbers, these numbers have come. They are irrational numbers, okay. And I have told you the meaning of root 3. Root 3 means 3 to the power half. Yes or no? And I have told you that if you think that root 4 is also a irrational number, then it is wrong, because actually it will come 2. If you think that root 36 is also a irrational number, it will be wrong, because it will come 6. You cannot root or root over, this is known as root over of any perfect square. You understand what is perfect square? Perfect square are numbers which are obtained by squaring some numbers like 4, 36, 25, 5 5s are 25, then 7 7s are 49, this kind of numbers. 49 which has come from 7 square, 64 which has come from 8 square, 81 which comes from 9 square, 121 which has come from 11 square, then 400 which has come from 20 square. So all these kind of numbers are known as perfect square. This is perfect square, this is perfect square, this is perfect square. However, 5 is not a perfect square, 7 is not a perfect square, 11 is not a perfect square, 18 is not a perfect square, 24 is not a perfect square. इन लोगों का रूट करने से रूट का कुछ ना कुछ रह जाएगा. Got my point? But then सबका रूट नहीं, लेकिन इन लोगों का रूट या फिर इन लोगों का रूट आप लोग अगर करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. दीज आर इरेशनल नंबर्स. एंड रिमेंबर, नाउ रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 natural numbers, 0 1 2 3 4 whole numbers, okay, then all the fractional numbers and all the fractional and all the irrational numbers, means all the decimal numbers, they are all real numbers. So real number include both irrational number and rational number. So this our question here. Every rational number is real number. Yes, true. Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Yes, right. Because not every point, every positive integer it should be. Every point on the number line is of the form root m, where m is the natural number. Wait. So what they have said? Every point on the number line is of the form root m. At first though, in the number line we have positive also, negative also.
We have 1, we have 2, we have 3, we have 4, we have 5. Oh, where they have said m is natural. M is natural number. Means we cannot take the negative numbers. They have mentioned in the question that m, where m is natural number. Question में mention कर दिया question में. So if m is natural number, we cannot take 0 also. We can take 1, 2, 3, 4. So 1 can be written as root 1. 4 can be written as, 2 can be written as root 4 because root 4's access is 2. But can 3 be written as something, root of something? Yes, 9 root. 4 can be written as 16 root. 5 can be written as 25 root. Yes or no? Huh? Then 6 can be written as 36 root. In this way, all the numbers can be written like this. If m is a natural number. If m is a natural number. But in this question, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Okay. Every point is not root m. I understand that inside this all natural numbers are there. Every point is not root m. Why I am telling you? Because if there is minus 1, if there is minus 2, if there is minus 3, you cannot write root over minus 4. You cannot write. Because whenever inside a root over, suppose root over minus 4 or root over minus 9, you put minus inside a root over or root over minus 2 or this kind of number. Root over 5 is there, so you have written root over minus 5, root over minus 6. This kind of number are known as complex number. Remember, there cannot be a minus, or in this way I can write, if there is a minus inside the root over, then the number is a complex number and not a real number. And complex number cannot be there in number line. Complex number cannot be there in number line. नंबर लाइन में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर हो नहीं सकता. इट कैन नॉट बी देयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So complex number cannot be there. Suppose for example root over minus 2, root over minus 5. These are complex number. However, root over 2, root over 5, these are normal numbers only. So I hope that you understood. Okay. Every real number is an irrational number. No. Rational numbers are also real numbers only. So this is false. Got my point? Are the square roots of all positive integers irrational? No. If not, give example of square root of a number that is rational number. Yes, I can give plenty of examples. Square root of all positive numbers are not irrational. This and this can be rational. This can be irrational. Square root of some positive numbers can be irrational. This can be root 13 can be rational. But root 18 can be rational. Root 19 can be rational. But do you think root 25 can be rational because the answer will be 5? Root 36 cannot be rational because the answer will be 5. Oh, sorry, 6. So, all are not. So, these are two examples. Okay. So, this answer is all are not and these are examples. Okay. Show that root 5 can be represented on the number line. This we will do later. I'll teach you later this one, okay? Root 5 can be this one. At the last of the chapter, I'll teach you. Fine? Now, moving forward.
Suppose, for example, you are given 1.27 bar. Suppose, for example, you are given simply 1.27, and I say that convert, forget this, okay, simply, and I say convert this in P by Q form or fraction form. So simply what you will do, 1.27, it is very simple, you will write 127 by 100, because for point there will be a 1 and 2 zeros. If they say 3.142678, what you will do, you will directly write 3142678 by point के लिए there will be 1 and 1 2 3 4 5 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros. So this तो छोटे में भी किया था, जब छोटा था ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करते थे कि नहीं करते थे? डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में आसानी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सर नो. अगर कोई तुमको बोलेगा 7.52 तो तुमको डायरेक्ट 752 लिखना है और डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट के लिए 1, बहुत ही आसान है. लेकिन कोई अगर तुमको इसको डेसिमल में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पड़े, क्योंकि ये तो एक्चुअली 1.27 ऐसे रिपीट होते जा रहा है, तो एक्चुअली नीचे कितना डालोगे? वो तो तुमको डेसिमल तो यहाँ पे पता था 6 2 है इसलिए 6 जीरोस, यहाँ पे 2 2 है 2 जीरोस, यहाँ पे 2 2 है 2 जीरोस, लेकिन यहाँ पे तो तुमको पता नहीं है, तो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली. तब तुम क्या करोगे? तब तुमको ऐसा करना है कि लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 bar. Then again you write x is equals to 1.272727 डॉट डॉट डॉट. अब क्या करना है, जो जीरोस रिपीट हो रहा है उसको इस साइड में लाना है. तो यहाँ पे कितना रिपीट हो रहा है? 2 डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. क्यों सर 100 से? 100x क्यों कर दिया? क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 127 इस साइड में आ जाएगा, फिर 27 ऐसा फिर से चलता रहेगा. अब ये तो अनगिनत बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो एक इधर आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अब तुम इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो. अब तुम क्या करो, 100x इक्वल्स टू 127.272727 डॉट 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 लिखा, और x इज इक्वल्स टू क्या था, ये x को माइनस करना है 1.272727 डॉट डॉट. अब जब तुम इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल्स टू, ये तो 27 कट गया क्योंकि ये भी इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, चला गया ये माइनस होके. 127 माइनस 1 इज 126, सो x इज इक्वल्स टू 126 by 99. If it is cancelable by 3, you can cancel. Yes, it is cancelable. If you cancel it, you will get 14 by 11. So x is equals to 9 से cancel करके, so 14 by 11. So 14 by 11 को डिवाइड करके देखो, अगर तुम 14, 11 और 14 को ऐसे डिवाइड करोगे ना, तो तुमको वापस ये डेसिमल मिलेगा. 11 1 जा 11, 3 पॉइंट के लिए 0 डाल दिया, 11 2 जा 22, 8 11 7 जा 80, तो 11 7 जा 77, फिर से 3 आया, फिर से 2 आएगा, फिर से 7 आएगा, फिर से 2 आएगा, इज 30, फिर 11 2 जा 22, ठीक है, फिर से क्या आ गया, 8 आ गया, फिर 11 7 जा 77, ऐसे करके चलता जाएगा. सो अब समझ में आया बात, इसको मैंने कर दिया एक्सप्रेस, किसमें? नहीं, फ्रैक्शन में. अब ऐसे तुमको बहुत सारे सम्स आ सकते हैं, जैसे दिमाग वाला सम्स आ सकता है थोड़ा सा. जैसे तुमको अगर बोले कि कन्वर्ट कन्वर्ट 0.235. अब देखो सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं रिपीट हो रहा है, ये थोड़ा सा झोल है यहाँ पे. तो आप क्या करो, x इज इक्वल्स टू 0.235 रिपीट कर लिखो.
अब याद रखना, पहले इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखने से पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको इस साइड में लाना है। तो कितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है? एक डिजिट। तो 10x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2.35 बार। अब इसको ऐसा लिखो, 10x इक्वल्स टू 2.35 डॉट डॉट चला गया। अब क्या हो जाएगा ऐसा? तो ये आपका ऐसा हो गया। अब आपको जो डिजिट रिपीट कर रहा है उससे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ नहीं, इसको आप भूल जाओ, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल फॉर्म हो गया। क्योंकि जो रिपीटिंग है वो इस साइड में, जो रिपीट नहीं हो रहा था उसको इस साइड में लिखना इंपॉर्टेंट है पहले। बात समझ में आया? तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट है तो 100 इंटू 10 1000x बन जाएगा। तो 235.353535 ऐसा चलता जाएगा। तो 1000x इज इक्वल्स टू 235.353535 ऐसा चलता गया। और ऊपर वाला 10x इज इक्वल्स टू 2.353535 ऐसा चलता गया। तो क्या हो जाएगा? इसको अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 990x इज इक्वल्स टू 233। तो x इज इक्वल्स टू 233/990। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? डू दी फॉलोइंग। Do the following. Number 1, you have to convert 0.6 bar. Number 2, you have to convert 0.65 bar. Number 3, you have to convert 1.72 bar. Number 4, you have to convert 5.23 bar. Number 5, 0.6 bar, 0.65 bar, 1.72 bar, 0.238 bar. बस do this 5.